pillar, Shahada. मैं हूँ शहादा। हर मुसलमान का पहला और सबसे जरूरी अकीदा ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कहो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल होगा। Second pillar of Islam is Salah. मैं हूँ सलाह। रोजाना 5 वक्त की नमाज है, मुसलमान पर फर्ज है। नमाज अल्लाह के करीब ले आती है। नमाज का हुक्म कुरान में दिया गया है, वअक़ीमुस सलाह व आतुज़ ज़कात। नमाज कायम करो और नमाज अदा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वल मा युहासब बिहिल अल-अब्द यौमल क़ियामत सलाह। क़यामत के दिन सबसे पहले बंदों की नमाज का हिसाब लिया जाएगा। Third pillar of Islam is ज़कात। मैं हूँ ज़कात। अल्लाह ने फर्ज किया है कि अपनी दौलत का एक छोटा हिस्सा गरीबों को दिया जाए ताकि वो भी अपनी जरूरत पूरी कर सके। ज़कात का हुक्म कुरान में कुछ इस तरह दिया गया है, खुद भी अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम। उनके माल में से सदका लो जो उन्हें पाक और साफ करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नक़सत सदक़तुन मिन माल। सदका देने से माल कम नहीं होता। The fourth pillar of Islam is रोज़ा। मैं हूँ रोज़ा। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हर मुसलमान पर फर्ज है। ये अल्लाह के लिए सब्र और तक़वा का इम्तिहान है। रोज़े का जिक्र कुरान में कुछ इस तरह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फर्ज किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हज्जा वलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमी वलदतहु उम्मुहु। जो शख्स हज करे और इसमें कोई गुनाह और बदज़बानी ना करे तो ऐसे लौटता है जैसे उसकी माँ ने अभी जन्मा हो। ये थे 5 उसूल जो इस्लाम का बुनियादी ढांचा है। शहादा, सला, ज़कात, रोज़ा और हज। इन 5 पिलर्स को अपनी जिंदगी में समझना और अपनाना हर मुसलमान का फर्ज है। जज़ाकल्लाह खैर। पेरेंट्स प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ बार बार हुजूर का नाम आ रहा है, तो आप लोग दरूद शरीफ पढ़ते रहिएगा। What a meaningful and insightful performance. Let's give another big round of applause to our students for their beautifully illustrating the essence of the 5 pillars of Islam's life. The 5 pillars: Shahada, Salah, Zakat. الإسلام على 5 أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى. بني الإسلام على 5 أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. وأكلم ربي 5 أطهر بدني بالصلاة، بوضوئي، بركوعي، بخشوعي دوما ألقى. بني الإسلام على 5 أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأنمي مالي بزكاتي، أطهره برضا الله، للفقراء المساكين، أعطيهم حقا لله. بني الإسلام على 5 أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. نفسي بالصوم أروضها، وبحب الله أصبرها، أتذكر إخواني الجوعى، بجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على 5 أركان في الدين:
our distinguished guest, Mr. Rehan Suri sir and Mr. Muhammad Amin sir are present here with us. Mr. Rehan, extend our heartfelt welcome to Muhammad Amin sir, the former Director and Chief Protocol of Election Commissioner of India. Sir, your service to the nation in upholding the democratic process with integrity and excellence is exemplary. So we welcome you here, sir. Also here, we have our backbone of our school, Mrs. Shamima Khatun with us. So I would like to request ma'am to come up on the stage so that we can recognize. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome Mrs. Shamima Khatun, wife of late Alhaj Abdul Sattar Sahab Neswali. This gentle lady has given her house to make a school, and her main motive was it should be a best of Montessori school and the best of madrasa. This was the condition which was laid down by her, that she wanted a school which can inculcate the best of modern education and the best of education of Dinia. Alhamdulillah, the school is going on the same track, and I hope that she is quite satisfied. And as part from the school, every month contributing also to the running of the school, alhamdulillah, as a hadiya. Jazakallah khair. We are very thankful to her. Or firqa parasti refers to difference among Muslims. Islam, however, discourages division and call for unity. Dr. Arun Ismail Shahid, who will speak about sectarianism in Islam. Brother, your way of worship is completely wrong. No, brother, you misunderstand. We follow the true path of Islam. Your practices are not the true teaching of Islam. Is this the way of Islam? Are we meant to argue over differences? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, we stand before you to speak on a topic of great importance and relevance in our times. Sectarianism or firqa parasti, and how it is viewed in Islam. Islam is a religion that emphasizes unity, brotherhood, and the collective strength of the Muslim Ummah. The division of the Muslim into sect goes against the very essence of Islamic teaching. Allah subhanahu wa ta'ala has made it clear in the Holy Quran that dividing ourselves based on sect is not permissible. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Imran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, and hold firmly to the rope of Allah altogether and do not become divided. This verse emphasizes the importance of unity among all Muslims. The robe of Allah is often understood as the Quran and the teaching of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are commanded to hold on to this rope together and to avoid division. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also warned us against the dangers of dividing into sects. In an authentic hadith narrated by Abu Hurairah radiallahu anha, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. My ummah will split into 73 sects. All of them will be in the fire except one. When asked who the saved will be, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied that it will be the one that follows what he and his companions followed. This hadith strongly emphasized the need to adhere to the original teaching of Islam without deviating into sectarian divides. Sectarianism creates divisions, weakens the Muslim Ummah, and leads to unnecessary conflicts. Islam calls for unity among all Muslims, regardless of their school of thoughts or interpretation. The focus should always be on our common beliefs rather than the differences. Allah also warned us about the consequences of division. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في
shaykh. Indeed, those who have divided their religion and become statue, O Muhammad, are not associated with them in anything. This is a clear warning. By indulging in sectarianism, we exclude ourselves from the true message of Islam. Sectarianism leads to hatred and weakens the Ummah. Islam is a religion of peace, unity and brotherhood. We must work to eliminate sectarianism by returning to the Quran and Sunnah. As Allah reminds us in the Quran, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Indeed, the believers are but brothers. So make settlements between your brothers. In conclusion, sectarianism is not in line with Islamic principles. It divides, weakens our community and distracts us from our true purpose. Let us strive to unite as an ummah, following the teaching of the Quran and the Sunnah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us all to the straight path and protect us from division and discord. Jazakallah.